Today we are going to start the new topic, Principle of Inheritance and Variation, which is the chapter number 5th of our NCERT book. The unit in which this chapter is coming, this whole unit comprises 12 marks. So I'm just going to tell you the important topics according to the page number of this chapter so that you can smoothly find it in your book and you can study it. On the page number 1 of this chapter, which is mentioned as the 69 in your book, the very first thing which we have to study, that is the definition of genetics. From the name itself, it is clear it is the branch of science, a branch of biology which deals with the inheritance as well as variation. That means transmission of characters and whatsoever difference which are occurring in the characters, that we have to study in this genetics under biology. Here definition of inheritance is also mentioned in this page number only. This definition of inheritance just tells that what passing of characters from parent to progeny. Parent से progeny में अगर characters जा रहे हैं, that will be called as an inheritance. Here mention it is character parent to progeny. Variation, the degree by which progeny differ from their parent. Whatsoever degree their features which are different in progeny as compared to their parent, that is called as a variation. Like we can see ourselves only, that we are having certain feature like our parent, but it is not whole. Why do variation occurs? It occurs because in variation, how many parents are involved? Two parents are involved, and sexual reproduction occurs, which involves fusion of gamete. Then on the page number 2, it is given about Mendel, who has carried out that hybridization experiment for almost the year of 7 years in which plant? Garden peas, which is known as Pisum sativum, and how many varieties he has taken? 14. Next, on the basis of this hybridization experiment, he has proposed certain laws of inheritance. Here I have used the term true breeding lines. What does it mean? It is explained here. It is that breeding line which have undergone continuous self-pollination, shows the stable trait of inheritance and expression for several generations. That means if we are going to take one plant and we are going to cross it, and then again whatsoever progeny we have derived from that plant, we are going to do selfing, self क्रॉस, मतलब उसी के प्लांट की जो सीड है उनसे ही जो नया प्लांट निकलेगा उसी में क्रॉस कराएंगे हम, किसी दूसरे नेक्स्ट प्लांट को नहीं लेंगे. सो इस वजह से क्या हो जाएगा, उनकी गैमेट्स प्योर हो जाएंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स. On that page only, 7 pair of contrasting traits which are studied by Mendel over the plant pea or the Pisum sativum are mentioned there, like seed shape, seed color, pod shape, pod color, flower position, stem height, flower color. What was the seed shape? I think you all have seen pea plant. It could be pea seeds you have seen. Pea seeds could be round or it could be having certain constrictions which we say wrinkled. Then seed color, mature seed color you all have seen. Dominant trait is yellow while the recessive is green. Pod shape, that means जो मटर की फली होती है. Full means it is flat and it is having proper shape. While constricted means it is having certain constrictions, certain depressions in its structure. Next time when you are going to purchase a pea pod, just look after it. Pod color, we all have seen pod color, green color, which is dominant, but if it gets yellow, then that is a recessive trait. Flower position, axial. Axial means it is present other than the tip, present at any position other than tip. Terminal, grows at tip. If it grows at the tip, it is called terminal. Stem height could be tall or could be dwarf. Tall is the dominant while dwarf is the recessive. Flower color, if it's a violet color, it's a dominant trait. If it's a white color, it's a recessive trait. Then on the page number 3, we are just getting introduced by a new term, inheritance of one gene. Inheritance of one gene means when one gene is getting transferred. For that, monohybrid cross is explained there, which is linked to the law of dominance. One portion of monohybrid cross is linked with the law of dominance, and another one is with the law of segregation. Also, we can say it is having two law of dominance and law of segregation also. Let us see what
Law of dominance states that when two contrasting genes for a character come together in an organism, then only one is expressed externally and shows visible effect. This gene which expresses itself is called dominant, while the other in the pair which does not express itself is called recessive. We are going to just understand it with the help of example. We have taken we have taken one pair of contrasting traits. Character is height, एंड कॉन्ट्रास्टिंग इज व्हाट, हाइट कुड बी टॉल और हाइट कुड बी डॉर्फ. ये हमने ले लिया. अब पेरेंट टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है. अब इसका जीनोटाइप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डोमिनेंट ट्रेट है उसी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेते हैं. जैसे टॉल है, वी हैव टेकन इट्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल टी. एंड बिकॉज जीन्स अकर इन पेयर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जीन्स पेयर में एग्जिस्ट करती हैं विच इज़ कॉल्ड एलील. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इट 2 टाइम्स, कैपिटल टी कैपिटल टी. रेसिव के लिए क्या रूल है, जिस अल्फ़ाबेट से आप डोमिनेंट को लिखेंगे उसी का आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यू विल यूज़ for representing dwarf trait. So we have written capital T, small t, small t. We can just see here what is happening here. We have just crossed it. कैपिटल टी गैमेट बनाया. वी नो दैट इन गैमेट आउट ऑफ द 2 एलिल्स या 2 पेयर में से एक ही जाता है. कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. क्रॉस करने की प्रॉबिलिटी यहाँ बनाई गई कि ये गैमेट इससे हो सकता है गैमेट फ्यूजन हो जाए, तब क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. या दिस प्रॉबिलिटीज आर देयर. बट इन सब में कैपिटल टी स्मॉल टी में जो फीचर हमें बाहर से दिखेगा दैट विल बी द टॉल. और ये जो नई जनरेशन हमें मिलती है क्रॉस कराने के बाद 2 पेरेंट को, दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन. So this cross only proves the Mendel's first law of dominance. That means among the 2 pair of contrasting genes or allele, only one expresses itself in F1 generation, and that which expresses itself, that means capital T, that tall gene is representing itself here. So that is the dominant, while the other one which is not representing here, it is small t, that is gene responsible for dwarfness, is recessive. So from here which law is proved, law of dominance. Before proceeding further, we should know F1 generation. F1 here represent to first filial generation. That means whatsoever first generation we will get after cross among the parent, that will be called as a first filial generation. So here we have to do selfing. Selfing means सपोज प्लांट को क्रॉस किया, उसमें नए सीड्स आए, अब उन्हीं सीड से जो प्लांट ग्रो करेगा उसी में ही पॉलिनेशन कराएंगे, दूसरे फर्दर किसी प्लांट के सीड जो प्लांट है उससे क्रॉस नहीं कराएंगे. मतलब जो हमारे F1 जनरेशन में प्लांट आए थे, इनके सीड्स ग्रो किए, इनसे नए प्लांट बने, जो प्लांट बने उसी से हम क्या करा देंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे, दूसरे नेक्स्ट प्लांट को इसमें एंट्री नहीं करेंगे. सो वॉट वी हैव टू डू सेल्फिंग ऑफ द F1 जनरेशन. Here what we have to do, we have taken again the parent male and female. Phenotype is tall. Here it is also tall, but it is heterozygous. Heterozygous means they are not having the same pair in allele. They are having different pair in their allele. Different pairs are there. Genotype capital T, small t. Gamete again one will go in the next generation. या गैमेट फॉर्मेशन में 1 ही जाएगा, आपको पता है पेयर सेग्रीगेट्स. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. Again probability of crossing, capital T can cross with this capital T can cross with this small t. Again this can cross with this one and this one, this one. So here capital probability, what are the probability of formation of gametes, capital T small, capital T small t, capital T small t, small t small t. So in first after crossing of the F1 generation, the next generation which we get, F2 generation, that is the second filial generation. In second filial generation we are getting capital T, that means pure tall. Capital T small t, that means heterozygous tall. I have the pure tall are known as homozygous dominant या homozygous tall. And that heterozygous, different alleles are there, even though dominant is expressing itself tall, while one is the pure recessive, that is the homozygous recessive. From here we can just see one is pure tall, other is heterozygous tall, and a third one is also heterozygous tall, and pure dwarf is 1. So from here we can calculate total tall are how many, 3, and dwarf are 1. तो या from here we are getting phenotypic ratio. phenotypic ratio मतलब बाहर से देखेंगे पौधे को तो कैसा दिखेगा, ratio on the basis of physical appearance. बाहर से देखने पे 3 will be appearing tall while 1 will be appearing dwarf. That's why we are getting ratio 3:1.
Next thing which is coming here, that is the genotypic ratio. Genotypic ratio means on the level of gene what is the ratio, ठीक है. So pure gene for pure tallness is 1, gene for heterozygous tallness are here 2, while gene for pure dwarf is 1. So we can say 1 is to 2 is to 1. Gene at gene level, here do its allele pair are there. So 1 is to 2 is to 1. It is the genotypic ratio of monohybrid cross. From here only Mendel has given his second law, that is the law of segregation of gametes. What does law of segregation of gamete means? It means that we have just seen in first filial generation these two gametes has got just made pair, capital T small t, but in the second generation along with that pair we are getting the pure that alleles also, capital T and small t. So again the reappearance of the gamete is occurring. That means the distribution of gamete which has occurred here, it has got segregated. So further we can read here, this cross among the F1 generation led Mendel to give another law, that is law of segregation or purity of gamete. अब मेंडल दूसरा लॉ दे देते हैं, जो सेकेंड लॉ आता है law of segregation या law of purity of gamete. How we are going to just define it? This law states that both parental alleles recessive and dominant separate and are expressed phenotypically in F2 generation when F2 generation was produced बाय अलाउिंग F1 हाइब्रिड टू सेल्फ पॉलिनेट. जब हमने F1 की सेल्फ क्रॉस करा दिया उस टाइम पे जो F2 जनरेशन आई उसमें हमें क्या दिख जाता है, डोमिनेंट ट्रेट भी दिख जाता है और रेसिव ट्रेट भी दिख जाता है एक्सप्रेस करते हुए अलॉन्ग विद दैट हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस ट्रेट भी. और इसका रेशियो क्या होता है, इट्स फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. Again I am showing you how you can just see it here. Again the dominant and the recessive had got segregated here and they are expressing itself phenotypically. डोमिनेंट अपने आप को फिनोटिपिकली यहाँ पे प्योर एक्सप्रेस कर रहा है और रेसिव भी प्योर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट these two which is heterozygous, they have expressed itself in F1 generation and this pair is also there in F2 generation. As we come to the page number 4, here we will get one new term, that is the factors. Factors are the term which Mendel has used for genes. He was thinking that something is there which passes from one generation, that is from parent, to the next generation, that is progeny, without getting changed. No severe changes or no further changes occur in that thing, and he called these thing as a factor, which were later on named as a genes. What is the definition of genes? Unit of inheritance which bears certain characteristic and which is expressed in the particular organism which these are present. Again here we find one definition, alleles. Alleles are what? Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. जीन जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर देंगे, these are known as a allele. Like we can see for tallness, for height, which alleles are there? Capital T, small t, small t. तो contrasting a pair of contrasting trait, पेयर है contrasting trait के. होमोजाइगस कंडीशन कब होगी एलील की? व्हेन द एलिक पेयर ऑफ जीन आर आइडेंटिकल. जब ये आइडेंटिकल है तो कौन सी कंडीशन हो गई? होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील व्हेन द एलिक पेयर ऑफ जीन आर नॉन आइडेंटिकल. जब वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, जैसे हेट्रोजाइगस हाइट की कंडीशन में हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी. In page number 5, the things which are given, these are just discussed here only, the law of segregation and monohybrid cross. So it is there. Here we can see one more thing, Punnett square. Punnett square is the graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. जब आप क्रॉस करते हो तो उस टाइम पे क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप आ सकते हैं, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे दिस आर.सी. पनेट. उन्होंने ये क्रॉस दिया एंड इसकी वजह से गैमेट का डिस्ट्रीब्यूशन वाज मेड इजी. लाइक एक साइड हमने मेल पेरेंट का लिख दिया, दूसरे साइड हमने फीमेल पेरेंट के गैमेट लिख दिए,
देन व्हाट विल हैपन, कैपिटल टी एक साथ आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गया, स्मॉल, फिर यहाँ पे आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गया, स्मॉल टी। वन थिंग यू हैव टू लुक आफ्टर व्हेन वी आर राइटिंग डोमिनेंट द जीन अलॉन्ग विद द रेसिव वन, एट दैट टाइम डोमिनेंट जीन इज रिटन फर्स्ट व्हाइल द रेसिव वन इज रिटन लेटर ऑन। यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इज ओके। Then next or third law which was given by Mendel, that was the law of independent assortment. Law of independent assortment is proved by Mendel in dihybrid cross. Mendel ने इसको dihybrid cross में prove किया था, and what he has said that in dihybrid cross the distribution of gametes occur independent of each other, बिना किसी पे डिपेंड किए distribution of gamete occurs in that organism. I'm just reading out it for you. It is the third law given by Mendel. It states that when inheritance of two or more genes occur, दो या दो से ज़्यादा जीन का इनहेरिटेंस हो रहा है एट वन टाइम, एक टाइम पे, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द गैमेट्स एंड इन द प्रोजेनी ऑफ सब्सिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा, ये नहीं होगी जहाँ पे डोमिनेंट जा रहा है वहीं पे दूसरा उसका पेयर जा रहा है, नहीं, इंडिपेंडेंटली दे विल मूव इन अ प्रोजेनी। द प्रूफ, टू प्रूव दिस ही डिड डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसको कैसे प्रूफ किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, इन सच क्रॉस टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर टेकन। किसी एक कैरेक्टर या ट्रेट के दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए जाते हैं। ही क्रॉस्ड होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड एंड येलो सीड with homozygous recessive wrinkled and green. I'm just going to explain you it later on. What is the ratio for this dihybrid cross? It is phenotypic ratio is 9:3:3:1, while genotypic ratio is 1:2:1:2:4:2:2:1:1. Now we are going to understand this dihybrid cross, which is going to prove law of independent assortment. It was said that two pair of contrasting traits are taken. So what are the contrasting traits we have taken? One, we have taken that parent, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, सीड का शेप ले लिया है, and what other we have taken, seed color. What is seed shape? Round. What is seed color? Yellow. Here what is seed shape? Wrinkled. Seed color green. Again gamete we have to represent, then capital alphabet we have to take, first alphabet we have to take, like round का R ले लिया capital, but it occurs in pair, so RR. Here Y we have taken, occurs in pair, that's why YY. Wrinkled इसी का स्मॉल अल्फ़ाबेट हो जाएगा, कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई। दिट वॉज द जीनोटाइप। गैमेट में क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर फीचर है उसका एक ही पेयर जाएगा, पेयर में से एक ही चीज़ जाएगी, एक ही इंडिविजुअल जाएगा। सो फ्रॉम हेयर कैपिटल आर, फ्रॉम हेयर कैपिटल वाई। द सेम थिंग इज हेयर, फ्रॉम हेयर स्मॉल आर, फ्रॉम हेयर स्मॉल वाई। व्हेन वी विल डू इट्स क्रॉस करेंगे तो एक वन एग्जाम्पल आई हैव टेकन हेयर, दैट कैपिटल आर, like suppose this is ry one gamete, this is a small ry another gamete, तो कैपिटल आर आ गया, उसके साथ कौन पेयर बनाएगा, स्मॉल आर, बिकॉज दे बोथ आर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेप, and then capital Y and then small y because they both are responsible for the color. We can just see here. So what we can just see here, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कंफ्यूज नहीं करना है कि आपने कैपिटल आर रख दिया फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नो, पेयर्स are always written together like capital R, small r, capital Y, small y. Here it is the F1 generation because it is having dominant gene capital R, capital Y. So it would be having which features, seed shape will be round and seed color will be yellow only. अब हमें इनकी सेल्फिंग करनी है। सेल्फिंग मतलब अब ये जो सीड्स आए थे F1 जनरेशन में, इन्हीं से प्लांट जो ग्रो किया उसी में आपस में क्रॉस करा दिया। एट दैट टाइम वी नीड पनेट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ सच ए लार्ज स्क्वायर। सो एट दैट टाइम हाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डू इट, तो इसके लिए हमने गैमेट बनाए हैं कि मेल में एक पर्टिकुलर गैमेट हो सकते हैं, फीमेल में एक हो सकते हैं। अभी गैमेट कैसे बनाते हैं, जस्ट हेल्पिंग यू आउट, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब क्योंकि इन दोनों के पेयर में से एक ही जाएगा जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, वी नो दैट, सो प्रोबेबिलिटी इज दैट कैपिटल आर, कैपिटल वाई। हो सकता है ये किसके साथ पेयर बना ले, इसके साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसकी पोजिशन सेटिस्फाई हो गई। बट देन स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी क्या है, किससे पेयर बना सकता है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किससे पेयर बना सकता है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। फ्रॉम हेयर ओनली इट इज सेटिस्फाइड
we have written it in this sequence only. Capital R, capital Y, capital R, small y, small r is capital Y, small r, small y. The same sequence you have to repeat here in female. It's so easy. अब इसको क्या कर देना, क्रॉस. क्रॉस कैसे करेंगे, सपोज कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो पहले कैपिटल आर लिख दिया, फिर ये कैपिटल आर लिख दिया, फिर कैपिटल वाई लिख दिया, फिर ये कैपिटल वाई. पहले इस लाइन को करना है, ठीक है. अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है. In the same way, we have to fill whole Punnett square. Just try to fill it. If you find any difficulty, just do ask me. I'll help you. But what we simply have to do, इसी को बस दोनों को साथ में लिख देना है, पेयर साथ में आ जाएंगे. जैसे कैपिटल आ रहा है उसके साथ दूसरा कैपिटल आ रहा है, कैपिटल वाई उसके साथ कैपिटल वाई. वन मोर आई एम जस्ट शोइंग यू हियर. सपोज स्मॉल आर स्मॉल वाई, बट यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा था, तो पहले डोमिनेंट को लिखते हैं, फिर रेसिव को लिखते हैं, फिर डोमिनेंट, फिर रेसिव. तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. द सेम थिंग हेयर वी कैन जस्ट सी कि आर आर स्मॉल है तो क्या लिख दिया हमने, स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई. द सेम थिंग इज देयर. इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव टू सी विच वी हैव गॉट हाउ मेनी राउंड येलो. ठीक है, राउंड येलो यानी कि एक डोमिनेंट आर रहेगा और दूसरा डोमिनेंट वाई रहेगा. एक भी अगर कैपिटल आर हो गया और एक भी कैपिटल वाई हो गया, यानी कि वो कौन सा दे देगा कलर आपको, सॉरी कौन सा शेप देकर, सीड का शेप राउंड हो जाएगा और सीड का कलर येलो हो जाएगा. तो आई हैव जस्ट मेंशन इट हेयर to help you out. I hope color is visible to you. Like green color is for round yellow. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It is satisfied. Then round and green के लिए like I have given here, dominant है, ये रेसिव है, तो ये राउंड शेप दे देगा, ये ग्रीन कलर दे देगा. 1 then 2 then where is 3 round and green के लिए, yes here it is 3. Then which is represented with the brown color. Then wrinkled yellow means seed would be having wrinkles and seed color will be yellow. So we can just see here 1 because it is recessive, wrinkled, so dominant, तो yellow color देगा. 1 2 क्योंकि एक भी अगर dominant है तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है. 2 3 सेम थिंग इज हियर. Wrinkled green केवल एक है इसमें, this one. What is called as a law of independent assortment? We can see it here. All are recessive, only dominant is 1. Can you see it here? The same way we can see it here. All are recessive and how many dominant? 1 are here. Another example we can just see here, where we can see here all are dominant, recessive is only 1. So independent of gamete or distribution of gamete is occurring independent of each other. That's why it is called as a law of independent assortment. And this is that progeny of F2 generation जिसका ये हमने निकाला है क्रॉस. सो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1. जीनोटिपिक आप कैलकुलेट कर लोगे. इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क फ्रॉम मी.